Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what are independent and dependent clauses. इससे पहले क्लास में हमने clause को define किया है. What is the main difference between phrase, clause and sentence? आज हम देखने जा रहे हैं कि what is independent clause and what is dependent clause. Very important informative class for you all. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास. इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. क्लास व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज. इन दोनों के एक हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उसके बिना पर आप समझ पाओगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. क्लॉज एज यू नो हम दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट्स हैं या दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसको हम नंबर वाइज बुलेट वाइज उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड डिपेंडेंट क्लास भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. कॉमन क्वालिटी इन बोथ सेंटेंसेस, बोथ क्लॉसेस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लास इंडिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. एंड डिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. Subject verb combination means subject and predicate. Clear now. The third point is very important, that independent clauses provides or expresses complete thought, complete meaning or thought. क्लास ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये आपको कंप्लीट मीनिंग या थॉट प्रोवाइड करेगा. वाइल ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंट क्लास है डज नॉट प्रोवाइड क्लियर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. क्लास इस बिना पर कि इंडिपेंडेंट क्लास क्लियर मीनिंग एंड कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है, सो इट कैन स्टैंड. द फोर्थ वन, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस. एज अ मैन सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लास सिर्फ वो क्लास है जो इट कैन स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस. जो कि डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस. क्लियर क्लास. जबकि ये खुद एक इट कैन स्टैंड अलोन एज अ मैन सेंटेंस, we can call it a sentence. The fifth one, we can call it a sentence. इसको हम sentence कह सकते हैं. And चूंकि ये it cannot stand alone as a man sentence, we cannot say it a man sentence. A man sentence or a sentence?
we cannot say it or call it a sentence. इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, सेंटेंस फ्रैगमेंट है, इसको मेन सेंटेंस के साथ इंडिपेंडेंट क्लास के साथ इसको मिलाना पड़ेगा. नंबर 6, it is called main clause. इसको मेन क्लास कहा जाता है. क्लियर? एंड डिपेंडेंट क्लास को इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लास. सबऑर्डिनेटिंग क्लास, इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहा जाता है. क्लियर? नंबर 7, independent clause, it starts with a noun clause. Clear? Noun or pronoun, noun clause or pronoun. इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम नाउन या नाउन क्लास से स्टार्ट करते हैं. क्लियर? एंड जो डिपेंडेंट क्लास है, इट स्टार्ट्स with subordinating conjunction, relative pronouns, and conjunctive adverbs. I'm not sure कि लास्ट सेंटेंस रिकॉर्ड स्क्रीन पे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इट नॉर्मली स्टार्ट्स विद नाउन और नॉन क्लॉज और प्रोनाउन. क्लियर? और जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउंस या कंजंक्टिव एडवर्ब से स्टार्ट होते. क्लास ये था मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड डिपेंडेंट क्लासेस. के इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी डिपेंडेंट क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इंडिपेंडेंट क्लासेस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंडेंट क्लासेस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. क्लियर? द थर्ड, यहां से डिफरेंस से शुरू है. द थर्ड में क्लास इसमें ये है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. जो इंडिपेंडेंट क्लास है, ये सुनने वाले को, पढ़ने वाले को कंप्लीट मीनिंग, आइडिया या जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है. जो डिपेंडेंट क्लास है, इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट. ये कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट प्रोवाइड नहीं करता, ये डिपेंडेंट है. क्लियर? नंबर 4 पे है, इट कैन स्टैंड अलोन इज अ मैन सेंटेंस because it conveys a clear meaning. That's why it can stand alone as a man sentence. Man sentence के तौर पर इसको आप अकेला यूज कर सकते हैं. Clear? And इसमें जो है, it cannot stand alone as a man sentence क्योंकि ये complete meaning और thought provide नहीं करता. That's why you cannot use alone as a man sentence. इसको आप किसी independent class के साथ आपको मिलाना पड़ता है. Clear? Number 5 पे class, we can call it a sentence. जबकि ये इट कैन स्टैंड अलोन इज अ मैन सेंटेंस, अकेला ये सेंटेंस आ सकता है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं. वी कैन नॉट कॉल इट और से इट अ सेंटेंस. डिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज अ मैन सेंटेंस एंड इट डज नॉट प्रोवाइड क्लियर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. नंबर 6, इट इज कॉल्ड मेन क्लॉज. इस इंडिपेंडेंट क्लास को, लेट सपोज सेंटेंस में अगर बहुत क्लॉजेस है, 2 3 4 क्लॉजेस है, तो इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लॉज बोलेंगे. एंड इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लास. और ये जो है, ये डिपेंडेंट क्लास जो है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है. क्लियर? नंबर 7, इट स्टार्ट्स विद अ नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन. इंडिपेंडेंट क्लासेस हमेशा नाउन से, नाउन क्लॉज से या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं. while जो डिपेंडेंट क्लासेस है, इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन because, if, even though, although, even though, इस किस्म के, या जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, whom, which, that, etc., या जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, however, otherwise, therefore,
इससे स्टार्ट होते हैं। क्लास ये था दोनों इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास में कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी। अब कुछ एग्जांपल्स देके जो है कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड डिपेंडेंट क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने एसे को, अपने राइटिंग को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ गुड राइटर, तो उनके लिए इन क्लासेस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लास ले ली, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज हंग्री। Class, this is your independent class. I was hungry. You can use this clause as a main sentence. Clear is sentence है। कोई भी independent class ले ले, उससे पहले आप कोई subordinating conjunction लगाएं, कोई relative pronouns लगाएं, कोई conjunctive adverbs लगाएं या दूसरे किस्म के जो transitional devices है वो लगाएं, तो उनके लगाने के बाद जो आपका independent class है वो बन जाएगा dependent class। उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इस क्लास को, इस सेंटेंस को, इसकी वैल्यू को आपने कम करना है, इसको मजबूर बनाना है, इसको कमज़ोर करना है, तो इससे पहले आप कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाए, कोई रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह लगाए, तो ये बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट क्लास से कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा डिपेंडेंट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल क्लास आई वॉज हंग्री, अगर मैं ये लगाऊं बिकॉज I was hungry, so now this sentence is a dependent clause। और ये क्लास ज़हन में याद रखें कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं they provide or they extract main theme, वो मेन थीम को सपोर्ट करते हैं। जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं ये बैकग्राउंड थीम, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास अगर मैं कहता हूँ बिकॉज आई वॉज हंग्री, तो ये तो एक बैकग्राउंड थीम है, एक छोटा से जो आइडिया है। मेन आइडिया कोई अलग है, जो एक्चुअल थीम है वो एक्चुअल थीम किस में है, वो इंडिपेंडेंट क्लास में है। जो एक्चुअल थीम है या जो मेन सब्जेक्ट है वो कभी भी डिपेंडेंट क्लास में नहीं हो सकता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एट राइस, मैंने चावल खाए बिफोर बिकॉज आई वॉज हंग्री, बिकॉज आई वॉज हंग्री। क्लास आपका जो मेन थीम है आई एट राइस, दिस इज योर मेन क्लॉज। क्लियर? इसमें आप पूरे सेंटेंस का रूह जो है, खुलासा इसमें है। आई एट राइस, मैंने चावल खाए, बिकॉज ये तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। क्यों मैंने खाए? बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। क्लियर क्लास? अच्छा, इस किस्म के क्लास कोई और सेंटेंस आप लगाए। इट वॉज डार्क व्हेन आई रीच्ड होम, इट वॉज डार्क व्हेन आई रीच्ड होम, अंधेरा था जब मैं घर पहुंचा। ये क्लास आपका है इंडिपेंडेंट क्लास और ये आपका डिपेंडेंट क्लास। इसी क्लास को अगर आपने इंडिपेंडेंट बनाना है तो इसे आप व्हेन को रिमूव कर दें। आई रीच्ड होम, नाउ दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर आप कहेंगे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो इट मीन्स कि कुछ बात एक और भी है, मेन बात कोई और है जो आप बताना चाह रहे हैं। तो क्या है? इट वॉज डार्क, अंधेरा था। क्लियर? हम कहते हैं इस तरह कि you will pass कब? if you work hard, you will pass if you work hard। अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा? you will pass। ये आपका जो मेन क्लास है, ये जो मेन थीम आप बताना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड में है। if you work hard, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। क्लास, उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के हवाले से कुछ ना कुछ आपने जाना होगा। आने वाले क्लासेस में हम डिपेंडेंट क्लासेस की जो सब 3 कैटेगरीज हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, उसको और उसकी पोजीशन इन अ सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।